Homomorphism and homomorphic species. What is a homomorphism? Let us see the definition. A map f from x to y be homomorphism between two topological species x tau x and y tau y if and only if satisfies the three conditions. The first one, f should be bijective. What it means? It means that f is 1 1 to the meaning of this one, and f is on 2. So for the homomorphism, the first condition on f is the bijection. Second, f is continuous. What it means? It means that for all open subsets of y, the inverse image of this open subset of y is open in x. So the second condition is the continuity of f. What is the third one? The inverse map f inverse from y to x should be continuous. What it means? It means the same, but of course in the language of the inverse map. So it means that for every open subset of x, the inverse image, what is the map? This is f inverse. So the inverse image of this v under f is open in y. So there are three conditions for an homomorphism. First one, the bijection of f. The second one, the continuity of f. And the third one, the continuity of the inverse map of f. तो अगर कोई भी मैप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन x and y. Now homomorphic species. Two topological species are homomorphic if and only if there exists an homomorphism. That is, आपके पास x tau x जो है वो y tau y की होमोमॉर्फिक होगी अगर आपके पास एक बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस विद द कॉन्टिन्यूस इनवर्स मैप जो है वो एग्जिस्ट करता हो बिटवीन दीज टू स्पीसीज, तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पीसीज हैं ये होमोमॉर्फिक होंगी. We also say such species topologically equivalent species. अब topologically equivalent species हम क्यों कहते हैं? इसकी रीजन ये है कि इनमें वन टू वन ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस एट द लेवल ऑफ देयर टोपोलॉजीज होती है. अगर आप उस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन में जाएं जो प्रीवियस स्लाइड पे थी तो उसमें आप देखेंगे कि आपके पास एक बाइजेक्टिव मैप होमोमॉर्फिज्म कब होता है? जब वो बजाते खुद कॉन्टिन्यूस हो, यानी कि आपके पास रेंज साइड पे जितने भी ओपन सेट्स है उसका इनवर्स इमेज दूसरी साइड पे यानी कि रेंज डोमेन साइड पे ओपन हो और उसका जो इनवर्स मैप है वो भी कॉन्टिन्यूस हो. व्हाट इट मीन्स कि जो आपके पास एफ की डोमेन साइड है जो कि रेंज साइड होगी एफ इनवर्स की, उसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उनका इमेज उनका बेसिकली इनवर्स इमेज जो कि आपके पास एफ का इमेज बनेगा, अंडर एफ उसका इमेज बनेगा. तो आपके पास वन टू वन एंड ऑन टू कॉरस्पॉन्डेंस एट द लेवल ऑफ देयर टोपोलॉजी. दैट्स वाई कि अगर हमारे पास दो होमोमॉर्फिक स्पेसीज हैं तो हम उनको कहते हैं ये टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट स्पेसीज हैं. और अगर हमारे पास दो स्पेसीज जो हैं टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या होमोमॉर्फिक हैं तो हम उनको राइट डाउन करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. एक्स इज होमोमॉर्फिक टू वाई. इन नेक्स्ट टॉपिक we will see some examples of the homomorphic species.